हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक, क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 3। क्या आप कभी शॉपिंग पर गए हैं? अगर आप शॉपिंग पर गए हैं तो आपने डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स तो ज़रूर देखे होंगी। फैब्रिक्स लाइक वूलन मफलर, शॉल्स, बेडशीट, ब्लैंकेट, कर्टन, टेबल क्लोथ्स, towels. Even gunny bags and school bags were made up of different kind of fabric. आप इसे समझने के लिए एक एक्टिविटी फॉर्म कर सकते हैं। आप किसी भी नियर बाई टेलर की शॉप पर जाइए और वहाँ से जितनी भी कटिंग ऑफ फैब्रिक लेफ्ट ओवर है आफ्टर स्ट्रेचिंग उसे कलेक्ट कीजिए। Feel and touch each piece of the fabric. Now try to label some of the fabric as a cotton, silk, wool, or synthetic after asking for help from the tailor. Do you wonder what these different fabrics are made up of? When you look at any fabric, it seems a continuous piece. Now look at it closely. What do you observe? आप एक सेकेंड एक्टिविटी भी परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ ट्राई टू फाइंड लूज थ्रेड और yarn at one of the edges and pull it out from cotton fabric piece. If no loose yarn are visible, you can gently pull one out with a pin or needle. जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, you might have observed something similar when you try to thread a needle. Many a times the end of the thread is separated into a few thin strands. This makes it difficult to pass the thread through the eye of the needle. The thin strand of thread that we see are made up of still thinner strand जिसे हम कहते हैं fibers. Fabrics are made up of yarn and yarn are further made up of fibers. लेकिन क्वेश्चन ये है कि फाइबर्स आते कहाँ से हैं? कुछ फाइबर्स होते हैं नेचुरल फाइबर और कुछ होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। The fabrics of some fibers such as cotton, jute, silk, wool are obtained from plant and animals और इन्हें हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स। For example, cotton and jute are example of fabrics obtained from plants. अगर हम बात करें वूल और सिल्क फाइबर्स की, they are obtained from animals. Wool is obtained from the flea of sheep or goat. It is also obtained from the hair of rabbits, yak, and camel. Silk fiber is drawn from the cocoon of silkworm. The next type is synthetic fiber, which are not obtained from plants or animal sources. इन्हीं को हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की, एग्जाम्पल है पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक। अब हम बात करेंगे सम प्लांट फाइबर्स की।
क्या आपने कॉटन देखी है? Cotton wool is used for filling mattresses or pillows. लेकिन क्वेश्चन ये है कि कॉटन आती कहाँ से है? It is grown in the fields. Cotton plants are usually grown at places having black soil and warm climate. क्या आप कुछ कंट्रीज़ का नाम बता सकते हैं जहाँ पर ब्लैक सॉइल? क्या आप कुछ स्टेट्स का नाम बता सकते हैं ऑफ आवर कंट्री जहाँ पर कॉटन ग्रो होती हो? द फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन. आफ्टर मेच्योरिंग द balls burst open and seeds covered with cotton fibers can be seen. क्या आपने कभी कॉटन का फील्ड देखा है? इट्स लुक लाइक अ फील्ड कवर्ड विथ स्नो. जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, फ्रॉम these balls cotton is usually picked by hands. Fibers are then separated from the seeds by combining combing. This process is called ginning of cotton. Ginning was traditionally done by hands, but आजकल मशीनों का इस्तेमाल करते हैं गिनिंग करने के लिए. अब हम सेकंड एग्जाम्पल लेंगे नेचुरल फाइबर्स का, जिसका नाम है जूट. Jute fiber is obtained from the stem of the jute plant. It is cultivated during the rainy season. In India, jute is mainly grown in West Bengal, Bihar, and Assam. The jute plant is normally harvested when it is at flowering stage. The stems of the harvested plant are immersed in the water for a few days. The stems, rot, and fiber are separated by hand. To make fabric, all these fibers are first converted into yarn. The process of making yarn from fibers is called spinning. In this process, fibers from a mass of cotton wool are drawn out and twisted. This brings the fiber together to form a yarn. A simple device used for spinning is a hand spindle, also called takli. Another hand operated device used for spinning is charkha. Use of charkha was popularized by Mahatma Gandhi as a part of the independence movement. He encouraged people to wear clothes made up of homespun yarn termed as khadi, and sun imported cloth made in the mills of Britain. To popularize and promote khadi, the government of India constituted a body called Khadi and Village Industries Commission in 1956. Spinning of yarn on a large scale is done with the help of spinning machine. After spinning, yarn are used for making fabrics.